کہ you only have 48 hours to live. Yes, جب آپ کو بتایا گیا کہ صرف 48 آئی ہوپ میں نے اردو میں صحیح بولا ہے 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے, اور آپ کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر الحمدللہ, اللہ نے تکلیف دی ہے تو اللہ اس کا سولوشن بھی دے گا. Actually it was the actual words were Allah Mia you gave it, you will fix it. بالکل. I didn't ask. I didn't ask him. Okay, you didn't ask. I had faith. آپ کو faith I had تھا. complete faith. I said you gave it, you will fix it. Because مجھے صرف اس وقت کنسرن تھا اپنے پیرنٹس کا, of course, and میرے ہسبینڈ کا, and I was in America and وہ لوگ پاکستان میں تھے, and it was just a very sudden thing. I was just visiting my چچا چچی and friends in America. وہ every 6 months وہ green card کے لیے جانا ہوتا تھا, تو it was just that trip. اینڈ سمٹمس کوئی ایز سچ کچھ خاص نہیں تھے, جسٹ کہ موسم وہاں کا چچا چچی کے پاس بہت ٹھنڈ تھی, اینڈ آئی ایم ناٹ سمبڈی ہو لائکس دا کولڈ ویدر, تو ہمیشہ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو میں ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ انکل سے کہہ رہی تھی کہ بس ہیٹ بڑھا دیں گھر میں, سردی آپ کو زیادہ لگ رہی تھی, برف تھی باہر, تو آئی wasn't used to that. I've lived half my life in Pakistan and half my life in LA. I studied in LA. تو وہاں کا ویدر بھی پاکستان جیسا ہی ہے. I think it's the best weather in the world. تو بس میں یہ سمٹمس تھے کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی, اینڈ ادھر سے میں نکلی اور اپنی بیسٹ فرینڈ اسکا کے پاس گئی. وہ 1 گھنٹہ دور تھی, وہ کنیکٹیکٹ میں تھی, اینڈ اس کے بعد میں ایک اور فرینڈ کے پاس گیا, اینڈ دین آئی جسٹ کولیپسڈ. دے ٹک می ٹو دا ہاسپٹل. اچھا, کچھ ایز سچ کوئی سمٹمس نہیں تھے, اینڈ میں گئی ہوں, اینڈ وہاں شیری گروو ہاسپٹل تھا, وہ کمیونٹی ہاسپٹل تھا, وہ اتنا اسپیشلائز نہیں کرتا تھا اس طرح کی چیزوں میں. تو دے ہیڈ می ایئر لفٹڈ ان اے ہیلی کاپٹر ٹو جانس ہاپکنس. اور آپ اس وقت کانشیس تھیں, آپ جاگی نہیں تھیں, یا آپ کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایئر لفٹ آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں, اس وقت تو میں تھی, اینڈ مائی بیسٹ فرینڈ اسکا ڈروو لائک 9 hours ڈاؤن. شی کیم, شی واز ود می ان دا ہیلی کاپٹر. تو اس وقت تک مجھے کوئی, انہوں نے بایوپسی کی اینڈ آل, دے کوڈنٹ ہینڈل اٹ, سو دے سینٹ می ٹو جانس ہاپکنس. اور آپ دیکھیں اللہ میاں آپ کو کوئی پرابلم دیتے ہیں تو اس کے سلوشن کتنا قریب ہوتا ہے. میں کبھی بھی میریلینڈ اور جانس ہاپکنس کے قریب گئی ہی نہیں تھی, جسٹ وزٹنگ فرینڈس, کہ وہ ٹائم گزارنا ہوتا تھا گرین کارڈ کے لیے. تو میں نے کہا سب سے مل لوں, دیٹس اٹ, اٹ واز جسٹ اے بریک. اینڈ آپ سوچیں کہ جانس ہاپکنس جو بیسٹ ہاسپٹل فار کینسر ان دا ورلڈ ہے, میں اس سے 15 منٹ دور تھی. تو اللہ میں نے پرابلم دیا, ساتھ ہی سلوشن دیا. تو ہی از دیٹ کائنڈ اینڈ مرسیفل فار آل آف اس. اینڈ بس پھر جب ہیلی کاپٹر میں گئے, جیسے ہم اترے, اٹ واز کرسمس مارننگ, December 25th 2008. تو کرسمس پہ تو نہیں گئی میں, کرسمس مارننگ پہ کیسے جا سکتی تھی میں. I was like نہیں, you know, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے, وہ تو ہیلر تھے. بالکل. تو انہوں نے کہا, جیسے میں اتری تو آپ سوچیں کہ اتنی ساری ٹیم آف ڈاکٹرز were working on Christmas morning. Yes. وہ چھٹی پہ نہیں تھے. تو 15-20 لوگ جیسے چھلانگ ماری. ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں, اینڈ شی سیڈ ینگ لیڈی یو گوئنگ ان فار کیموتھراپی. تو کیموتھراپی مجھے رجسٹر ہوا. آئی سیڈ وائی, اینڈ شی سیڈ یو ہیو AML. مجھے کیا پتا AML کیا ہے. She said acute, what is that? She goes acute myeloid leukemia. So I understood leukemia. I said shukr alhamdulillah, I could see, I could hear. And then when you're in America aapko consent form sign karne padte hain. And تو I said شکر ہے کہ میں خود سے سائن کر سکتی ہوں, because میری فیملی وہاں نہیں تھی. So and then that's when I said اللہ میاں thank you. لیکن جب آپ کو پہلی مطلب جب انہوں نے بولا یہ جملے انہوں نے بولے کہ 48 hours ہیں آپ کے پاس, تو مطلب I know کہ they said Hopkins said you have the lowest blood count we've ever seen. Hopkins یہ کہہ رہا ہے. I was like okay. دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کیا وہ ایک حقیقت بھی لگ رہی تھی آپ کو کہ کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ آپ صرف اگلے 48 گھنٹے کے لیے زندہ ہیں؟ آپ کو یہ حقیقت بھی فیل ہو رہی تھی؟ I'm not the kind of person جو اپنا سوچتا ہے بہت زیادہ. میں ہمیشہ دوسروں کا سوچتی ہوں. تو وہ ہٹ ہی نہیں کیا آپ کو؟ تو مجھے اپنا سیکنڈری لگا, اور میں نے کہا امی ابو کو کیا کہنا ہے, میاں کو کیا کہنا ہے. That was my main concern کہ یہ لوگ تو ڈیوسٹیٹ ہو جائیں گے.
تو that was just then I just said Allah may you will fix it. Okay. اور پھر آپ بہت عرصے تک اکیلے وہاں پہ تھی؟ اکیلے تھی کیونکہ کسی کے پاس ویزا ہی نہیں تھا. امی ابو کا تو پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا, اس میں ٹائم لگ گیا. میرے میاں کبھی پہلے گئے نہیں تھے امریکہ, تو ان کو obviously زیادہ چیک کر رہے تھے, 3-4 مہینے ان لوگوں کو لگ گئے تھے. So yeah, that's what it was. آپ نے کال کر کے خود کو بتایا اپنے پیرنٹس کو؟ نہیں, ان لوگوں نے جو پچھلا ہاسپٹل تھا انہوں نے کال کر کے ان کو بتا دیا, تو they were all devastated. اور کتنا مشکل ٹائم ہوگا نا ان کے لیے بھی کہ وہ آ نہیں سکتے اپنی بیٹی. رائٹ. اور آپ کے لیے بھی؟ یس. اس کے بعد تو میرا تو ایسا ٹائم شروع ہو گیا تھا کہ بہت ہائی ڈوز سائٹارابن دی گئی تھی مجھے, وچ از ہائی ڈوز کیموتھراپی. اینڈ ود ان اے ویک اور سو میرے بال ایسے جیسے آپ نے منہ دھویا تو یوں کیا تو بال سارے ہاتھ پہ آ رہے تھے, تو میں نے کہا جسٹ شیو اٹ آف. تو اتنی اسٹرینتھ کہاں سے لاتی ہیں لیلا؟ مطلب وہ ہمیشہ سے تھا, وہ اللہ سے کنیکشن بچپن سے تھا, ہمیشہ سے اسپرچل ریلیجس. آئی ڈونٹ تھنک پیپل ہو سے دیئر پریئرز 5 times a day are religious. وہ آپ اپنی اللہ میاں دیکھیے, we can say کہ نماز صرف کرائٹیرین یا ریلیجن یا اللہ سے قریب ہونے کا ہے. I just feel کہ نماز پتہ کیا ہے, ہم جیسے فون ہے وہ ہمارا چارجر ہے. اللہ میں نے ہماری باڈی بنائی ہے, ان کو پتہ ہے کہ آگ میں رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا, یہ کریں گے تو خراب, یہ کریں گے تو اچھا ہوگا, تو ہی نوز واٹس بیسٹ فار اس. تو دیٹ از آر کنیکشن. وہ بچپن سے تھا, وہ نمازیں وہ دادی جان سے میری بچپن سے تھیں. بٹ اس کے علاوہ بھی there was like this spiritual connection. That was always there, and I think it was there for this moment maybe that us waqt I didn't. I'm strangely enough I don't panic in crises. In a crisis I don't panic. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں بہت ہی روتی ہوں. کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہو جائے نا, کوئی بھی چیز اگر چلی جائے نا کہ مجھے یہ ایسے چاہیے تھی اور وہ کوئی نہیں سکتا جائے, تو میں تو مطلب اللہ سے شکوے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, اور میں ہی رہ گئی جس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ میں نے کبھی نہیں کیا, کبھی. اس سے تو میں اتنی انسپائر ہو رہی تھی. نہیں, why me try کہ میں آپ سے لے لوں یہ تھوڑی سی چیز. I'll tell you something. This is something I tell a lot of people. میری امی, I'll tell you a small thing. جب میں ٹی وی پر آئی, I was very young, 16 or so. اس کی بھی کہانی کہ کیسے آئی تھی وہ بعد میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. سو I said to اماں کہ اماں ہم تو ہر ایک کو ہیلپ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, آپ پہ یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ پہنے, I want the other person to look better than whatever they are doing right now. تو میں کہتی تھی اماں ہم کسی سے جیلس نہیں ہوتے, تو لوگ ہم سے جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ سمپل کوسچن a teenager would ask a mom. She said بیٹے you're very lucky, کیونکہ آپ کی نیچر بھی آپ کی قسمت ہے. یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے. So that stuck with me. So that helped me even when the time جب یہ ہوا میرے ساتھ, تو میں نے سوچا کہ I just thought کہ وہ تو اللہ is going to fix it. وہ تو faith 100% تھا ہی تھا. Then second چیز is doctors پہ believe کریں آپ کہ they definitely know better than I do. I don't know anything about this. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. And thirdly میرے پاس کیا آپشن ہے, یا تو میں نیگیٹو ہو جاؤں بالکل ڈپریشن میں چلی جاؤں, یا میں پازیٹیو ہو جاؤں. سو آئی چوز ٹو بی پازیٹیو. سو دین جتنا بھی درد تھا, جتنی بھی چیزیں تھیں, جتنے بھی بغیر اینستھیزیا کے انجیکشنز لگتے تھے, پائپس ڈلتے تھے ٹو دا ہارٹ اینڈ ایوریتھنگ, آئی واز ٹو ویک ٹو ٹیک اٹ. سو اس میں صرف آپ شکر الحمد للہ ہی کہہ سکتے تھے, بیکاز آئی چوز دیٹ پاتھ. آپ بلیو کرو گے رابعہ, ایون اگر آپ کا انٹرویو بہت لانگ ہو جاتا ہے, یو کین کٹ دیز تھنگز آؤٹ. میرے ساتھ والے کمرے میں جانس ہاپکنز میں کوئی تھا لڑکا جس نے کہا آئی کینٹ ٹیک اٹ, اور اس نے اپنی پائپس نکالی اور بلیڈ کرتا ہوا چلا گیا. اتنا پین کی بھی الگ الگ ٹائپس ہوتی ہیں, یہ بھی پتہ چلا لائف میں. تو پھر ٹو کٹ اے ویری لانگ اسٹوری آف پیریڈ آف 7-8 years short, بہت سارے کیموتھراپیز ہوئے, اس میں بال چلے گئے, آئی لیشز بھی چلے گئے, اینڈ کھانا پینا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ صرف آئی وی پہ آپ کی میڈیسنز لگتی تھیں, اینڈ کیموتھراپی کا بھی بیگ لگتا تھا صرف ایک, اٹس لائک این آئی وی, جسٹ ٹو لیٹ یور ویورز نو کہ بہت ساری چیزیں میں نے بھی تو لرن کی.
एंड उसके बाद 4 डोजेस ऑफ कीमोथेरेपी हुआ. कीमोथेरेपी में ये होता है कि आपको वो बैग लगता है, 5 दिन आप सिर्फ वॉमिट कर रहे होते हैं और आप इतने वीक होते हैं कि कुछ खाना होता नहीं है, तो जस्ट रेचिंग. एंड उसके बाद आपका ब्लड काउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वो गुड एंड बैड सेल सब ख़त्म कर देता है. अच्छा. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वो 10 डे पीरियड होता है जब आपका ब्लड काउंट बढ़ता है, फिर आपको दोबारा कीमोथेरेपी देते हैं. 4 दफ़ा ऐसे होता है, 4 दफ़ा मिनिमम होता है. एंड उसके बाद आपको रेडिएशन देते हैं. तो ये कलर जो मैंने पहना हुआ है ना, ये कलर मेरी स्किन हो गई थी पूरी, हेड टू टो. मैं सिर्फ देखती थी कि मेरे मियाँ और मेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है. वो लोग कब तक पहुँच गए थे वहाँ पे? बिकॉज मुझे 3-4 मंथ्स. हाँ, उनको 4 महीने लगे थे आप तक पहुँचने में. पेरेंट्स पहले आए थे, उनके हस्बैंड आप पेरेंट्स आ गए थे, फिर अब्बू वापस चले गए थे 1-2 महीने में, फिर माय हस्बैंड केम इन अप्रैल. यू वेरी you really researched me, man. No, because I was just so impressed. I kept reading, you know. और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बहुत कुछ होना है. अभी तो ये शुरू हुई है. अभी तो ये शुरू हुई है. Yeah, this was the beginning. This is the beginning. So December to April ही समझे आप ये हुआ है. My husband came in April. मैंने जॉन्स हॉपकिंस से कहा कि मुझे ट्रैवल करना. I don't want to be in this place. I want to be back where I studied. I studied at UCLA in Los Angeles. I said मुझे ये ठंड वाली जगह पसंद ही नहीं है. I want to go to LA. मुझे वहाँ के सिस्टम में आप ऐड कर लें. तो जॉन्स हॉपकिंस इज़ अ प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी, और आप सोचें कि वहाँ पर $500,000 की मेरी एक कीमोथेरेपी होती थी, जो कि बिकॉज आई वाज अ ग्रीन कार्ड होल्डर तो मुझे फ्री में मिली थी. मैं एक्चुअली यही बात सोच रही थी, पर मुझे लगा नहीं कि सही कि मैं पूछूं आपसे. नहीं पूछे, लोगों को तो नॉलेज है ही नहीं. सो आप देखें कि वो लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक पाकिस्तानी मुसलमान के लिए क्या कुछ कर रहे थे. They never asked me anything. If I'm a citizen, I'm a citizen. उस समय सिटीजन नहीं थी, ग्रीन कार्ड पे मैं रेजिडेंट थी. उसके बाद मैंने कहा मुझे ये मैरीलैंड में नहीं रहना है, मुझे जाना है, बस पता नहीं क्यों. I just wanted to be somewhere which was home. और बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मैं बहुत इतनी वीक हो गई थी राबिया, दैट मैं जागी होती थी, मैं ऐसे बैठी होती थी, मुझसे आंखें नहीं खुलती थी. ऐसे बैठी हूँ, eyes are closed, I could not open my eyes. And I had my मेरी डिस्टेंट अब्बू अम्मी की कज़न थी, गोल्डी खान, गोल्डी पप्पो. वो आती थी रोज़, एंड वो रोज़ सूरह रहमान लगा देती थी, मेरे के दुआएं करती थी. गॉड ब्लेस हर, शी वाज अ गार्डियन एंजल फॉर मी देन, जब तक मैं LA नहीं आई. तो जब मैं LA आने का मैंने बोला, उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं भेज सकते हैं, आप बहुत वीक हैं. मैं कहा I don't care, I want to go somewhere which has some semblance of home. And I said you cannot refuse me. आपको पता है वहाँ पे इतने laws ऐसे हैं कि अगर पेशेंट, जैसे वो आदमी निकल गया था, अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे कि मुझे एक चीज़ नहीं करनी, फोर्स नहीं कर तो फोर्स नहीं कर सकते. So आप उनकी अगेंस्ट विशेस के? हाँ, मैंने कहा मुझे इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन डालें कि मैं एक फ़्लाइट ले सकूँ. ओह वाओ, ओके. माय मदर वाज विद मी. तब तक मेरे मियाँ नहीं आए थे. तो उन्होंने यूँ देखा मुझे, फिर उन्होंने कहा ऑल राइट, विल डू आवर बेस्ट. तो इतनी सारी बातें अब याद आ रही हैं, क्योंकि अब बात कर रही हूँ तो सब चीज़ें फ्लैश कर रही हैं. तो या देन आई लेफ्ट फॉर LA, अम्मी के साथ आ गई. एंड उसके 1 महीने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे. एंड उसके बाद फिर और कीमोथेरेपी. वो रोमांटिक चीज़ तो बताएं ना भाई, थोड़ा दुख में हम रोमांस भी डालें. कि एयरपोर्ट पे खुद लेने गई थी अपने हस्बैंड को. How did you know? Oh my God! राबिया, मेरी इतनी एक फिल्म हम की था चल रहे, which is not to take away the seriousness or the importance of the situation, but मैंने एक रोमांटिक एंगल life is too serious डाले ना. तो वो क्या था, वो क्या दिल में कुछ हो रहा था, या थोड़ा ये भी था वो पहली दफा आए थे तो उनको काफी देर रोक लिया था चेकिंग में, कस्टम्स में, और आप बाहर वेट कर रही थी. मैं वेट कर रही थी. Yeah, I was wearing a scarf on my head because I had no hair. But he came up to me and he looked at me and he was like, "ठीक तो हो." So nice. Yeah. Because instead of making a big deal, he made it so normal. You cannot imagine. I think I'm alive today. Allah, and then my parents, and then I just wanted to live for him.
I just wanted to be the best of what I could be for him. तो जब उन्होंने ये बोला तो अब धड़ रोना शुरू हो गई? नहीं, I was just happy, I just hugged him. Okay, and he was like, you're all right, you look great, you're so beautiful. चलें. You know, he's just so the most amazing man in the whole world, I think. अभी मालूम करते हैं मिले कैसे आपको. आगे क्या यहाँ पे करें फिर स्टोरी को दोबारा लेके चलें या पहले ये पार्ट खत्म करें फिर उस पे क्या ख्याल है आपका, क्या करना चाहिए? नहीं आप बताएं, कहानी आपकी है जो आपको समझ आए. आपको तो सब कुछ पहले ही पता है. लेकिन ऑडियंस को नहीं पता. चलें फिर आई थिंक कंटिन्यू करते हैं कि सैडली यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई. आपको फिर एक और शॉक मिला आई थिंक कुछ महीने बाद. फिर देन दे सेड कि अब रेडिएशन के बाद वी वांट टू ट्राई फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. सो फैमिली सबसे पहले होती है, सिबलिंग्स को चेक करते हैं. नोबडी मैच्ड, पेरेंट्स, माय हस्बैंड, नोबडी मैच्ड. आप देखिए अल्लाह मियाँ ने लोगों को जब बोन मैरो डोनर नहीं मिलता, सालों तक नहीं मिलता, तो उनकी कीमोथेरेपीज चलती रहती हैं, पेनफुल प्रोसेस चलता रहता है, उनको मैच ही कोई नहीं. अच्छा, तो अगर बोन मैरो मिल जाए तो फिर कैंसर क्योर हो जाता है? सॉरी मैं बड़ा डम क्वेश्चन पूछ रही हूं. नहीं डम क्वेश्चन नहीं है, मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी. सो आई गेट टू दैट. सो अगर आपका बोन मैरो डोनर मिलता है तो आप उसको फिर आप मैच करते हैं. इट हैज़ टू मैच लाइक 9.25 आउट ऑफ 10. आपका जैसे DNA होता है वैसे राबिया HLA होता है. इट्स अ डिज़ाइन ऑफ द ब्लड. सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने क्या क्या. ह्यूमन बॉडी इज़ अ मिरेकल. तो वो 9.25 HLA शुड मैच आउट ऑफ 10. तो दैट इज़ समबडी जिसका ब्लड आप लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. लोगों को एक भी नहीं मिलता. मैं समझी थी पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, कोई ये रीजन से मुझे मिलेगा क्योंकि एथनिसिटी काउंट करेगी मैं कहाँ से हूँ और मुझे वहाँ से मैच मिलेगा. पाकिस्तान में उस ज़माने में आ रहा हूँ जी नो अगर अभी तक है कि नहीं, बोन मैरो रजिस्ट्री नहीं थी. इंडिया में थी, आई थिंक चाइना में थी. तो मैं सोचा था इस रीजन से कोई मैच करेगा मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा आपके सिबलिंग्स और फैमिली नहीं मैच की तो वी विल लुक इंटरनेशनली. उन्होंने मेरे भाई को लंदन में भी किट भेजा फॉर टेस्टिंग एंड स्टफ, बट नहीं मैच किया कोई मुझे. तो उन्होंने फिर अपनी नेशनल इंटरनेशनल बोन मैरो रजिस्ट्री को देखा एंड उसमें से मुझे एक नहीं 19 डोनर मिले जो मुझे मैच करते थे. तो आप देखें ना अल्लाह ने कितना सहूलत दी. एक नहीं 99 लोगों को नहीं मिलते बोन मैरो. 19 जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी. अक्सर ये होता है कि जैसे, और आपको पता है बोन मैरो रजिस्ट्री में होना इतना कोई मुश्किल नहीं होता. कॉटन स्वाब आपके सलाइवा का लेते हैं, थूक से लेते हैं, उससे आप डेटाबेस में चेक करते हैं और फीड कर देते हैं. 19 में से अगर 10 भी कहते हैं कि हम अब नहीं हैं यहाँ पे, अमेरिका में नहीं हैं या अब नहीं, तो कितने मैचेस थे. तो 2 साल फिर मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसे होता है, लोग समझते हैं कि डोनर को तकलीफ होती है. आई थिंक मैं बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी कि बट 2 चीज़ें हो रही हैं. आई थिंक अच्छा है विच आई वुड लाइक टू से, अगर हम सब रजिस्टर करा सकते हैं तो हम कराएं, बिकॉज़ आई डोंट नो इफ देयर इज वन हियर. नहीं है तो we should I was create very one. sad about that also. I tried to get one done. मुझे लगता है I'm hoping कि पाकिस्तान में. I'm not sure. उस वक्त नहीं था एटलीस्ट. तो और दूसरा आप बताई थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता कैसे? ट्रांसप्लांट होता कैसे? It's just a bag on the IV. वो डोनर का ब्लड within 24 hours मिलता है और वो आपके सिस्टम, मेरा पूरा सिस्टम यानी कि ब्लड पूरा क्लीन हो जाता है विद द रेडिएशन. ज़ीरो, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी का, नो इम्यून सिस्टम, नो रेजिस्टेंस. उसके बाद वो डलता है. नया डालते हैं. ओके. तो वो आया, उन्होंने कहा इंटरनेशनल डोनर है, आपको आइडेंटिटी बताते नहीं शुरू में. ठीक है. उसका भी एक रीज़न है. आइडेंटिटी नहीं बताते. उन्होंने कहा इट्स अ मेल, इट्स समवन हु इज़ 41 years old एंड कोई ICU नर्स है. ऐसा ठीक है. उन्होंने वो लगाया बैग. उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो ब्लड को रिकग्नाइज नहीं करती. बॉडी कहती है दिस इज नॉट माई ब्लड, गेट आउट ऑफ हियर, ये क्या है. एंड द ब्लड थिंक्स दैट द बॉडी इज फॉरेन एंड देयर इज लाइक अ वॉर. या सो सम ऑफ द फाइट इज रिक्वायर्ड ताकि आपका जो भी कोई बैड सेल्स हैं, कैंसर बेसिकली
is something that multiplies in your body जो आपकी body को requirement नहीं है. Okay. हर हॉपकिंस कहता है हर इंसान में कैंसर सेल्स हैं. किसी के होते हैं मल्टीप्लाई, किसी के नहीं होते. आपके इम्यून सिस्टम पे और टाइमिंग पे डिपेंड करता है. कहीं आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, उस वक्त को कैंसर सेल्स आए या मल्टीप्लाई हुए और आप बॉडी रेजिस्ट नहीं कर सकी, दैट्स जस्ट कैंसर. हमारे घरों में तो हम लोग कैंसर बोलते भी नहीं थे. दादी जान कहती थी ये वर्ड भी नहीं बोलो, यू नो, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कहता भी नहीं है ये. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया इतने अरसे के बाद. 3-3, 4-4 महीने में रहती थी और 10-10 दिन घर आती थी. तो मैं गई घर तो मुझे स्टमक में दर्द शुरू हो गया. तो some of that war is needed, but some of that war is not needed. It can be fatal, it can kill you. तो वो ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. इसको कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़. तो मैं हर हफ्ते जाती थी चेकअप्स के लिए. एंड जब मैं एक दिन गई तो मैंने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है. तो उन्होंने मुझे फिर रोक ही लिया और एडमिट कर लिया. उस दिन मैं बहुत दुखी हुई. आई थॉट कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, सब ठीक हो जाएगा. बट माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव. आई सेड नहीं, व्हाटएवर इज़ बेस्ट फॉर यू. तो वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ हुआ. फिर मैंने उसको फ़ाइट किया. उसको फ़ाइट करने के लिए मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था. आई हार्डली हैड एन इम्यून सिस्टम. अब स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक दवाई होती है जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स लेते हैं एंड देन दे वर्क आउट. बट मैं तो एक वेजिटेबल थी ना, तो स्टेरॉइड्स दिए. उससे क्या हुआ कि वो बोन्स पे अफेक्ट करता है. तो पूरी रात जैसे घुटने से लेके पाँव तक जैसे कोई जैगेड आरी होती है ना, नॉट अ शार्प नाइफ, जैसे आरी होती है, वो कोई 100 ऊपर से नीचे विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ सेकेंड मुझे लगता था कोई काट रहा है ऊपर से नीचे. पूरी रात जैसे चीखे मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये करती थी. And my husband was so affected by it because men are fixers. They want to fix things. And when they see someone they love going through that pain, वो उनके लिए unbearable होता है. पूरी रात यूँ खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे. फिर अगली रात क्या होता था, जैसे बाजू में वारी चल रही है विदाउट स्टॉपिंग, वो बोन्स जो डिटेरियोरेट हो रही होंगी. कैसे बर्दाश्त किया है आपने ये सब कुछ? बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया ही कुछ नहीं. उससे सिर्फ अल्लाह ने करवाया. ही हेल्ड माई हैंड थ्रू आउट. आई डिड नथिंग. आई जस्ट गेव माई सेल्फ अप टू हिम. जब आप सुपुर्द कर देते हैं ना अपने आप को, तो फिर आपने कुछ करना ही नहीं है, उनका काम है. फिर अगले दिन क्या होता था, दोनों में हो रहा होता था. फिर ऐसे दर्द की मैं आपको एग्जाम का बता रही थी. फिर हार्ट में जैसे फील होता था जैसे को पतला चाकू हर हार्ट बीट पे लग रहा है. तो मैंने एक दिन पैनिक में डॉक्टर को ही कॉल कर लिया कि क्या. उन्होंने कहा ये तो होगा, ये तो कीमोथेरेपी का रिएक्शंस हैं. फिर अगले दिन बैक में जैसे बैक ऑफ द रिब केज में फील हो रहा है कि चाकू लग रहा है. और तीसरे दिन दोनों में हो रहा है. तो मैं यूं करके क्लॉक देखती थी, मैं आंखें बंद करती थी, मुझे लगता था घंटों गुजर गए और वहाँ 1 मिनट नहीं गुजरा होता था कि बस ये रात गुजर जाए बस. तो इतनी सारी पेन्स के बाद वो स्टेरॉइड्स आर लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. दे कैन फाइट योर वॉर फॉर यू बट दे ईट अप योर बोन्स. तो उसके बाद मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में घर चली गई. ये फाइट करने के बाद भी घर चली गई. थोड़े दिनों के बाद मुझे अपने लेफ़्ट हिप में दर्द शुरू हो गया और इतना कि चला नहीं जा रहा था. वज़न, और मेरा वज़न भी कोई 90 पाउंड होगा उस वक्त, और वो भी मेरा हिप नहीं ले रहा था. तो जो फीमर होता है हमारा वो नहीं ले रहा था. तो उन्होंने कहा हम एक बोन डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं. वी ड्रिल इनटू योर फीमर एंड वी पुट इन सम सीमेंट टू मेक दैट फीमर नॉट कोलैप्स, to prevent it from collapsing. तो उन्होंने वो किया February 2010. So I'm talking 2008 December से अब 10 हो गया. 2010 में ये bone decompression surgery हुई और थोड़ा दर्द रहा. It didn't really collapse. And by January 2011
beginning of January 2011, I think it collapsed. And they said complete hip replacement surgery होगी. I said you should have done it last year. कर ही देते. मैं इतने साल, इतने अरसे, पूरा साल, नहीं February 10 to January 11. पूरा साल ही हो गया. अब during that time, my father fell from his bed. पाकिस्तान में थे. वो बिस्तर से जैसे रोल आउट करते हैं ना, गिर गए. उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी थी. At the same time when they were recommending it for me. Okay. So when I told the doctors, I said, I need to go to Pakistan, my father is not well. They said, you cannot travel. You're not fit to travel. And और मुझे पता था कि मेरे अब्बू चले जाएंगे क्योंकि मैंने एक छोटी सर्जरी की है और डबल मेरी एज से डबल है, वो इतना पेन कैसे लेंगे. मुझे एक गट फीलिंग हो गई थी कि मेरे अब्बू सर्वाइव नहीं करेंगे. आई डोंट नो बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू हिम. मैं फरमाइशी प्रोग्राम थी. भाई के बाद ही जस्ट वांटेड कि मुझे एक बेटी चाहिए. ज़रा गोरा टाइप आदमी थे वो, तो टिपिकल नहीं थे. वांटेड अ डॉटर. तो मुझे बस एक फीलिंग हो गई थी. और उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई. तो सर्जरी से पहले ब्लड कोएगुलेंट देते हैं ब्लड थिक करने के लिए ताकि लूज़ ना करें ब्लड. और सर्जरी के बाद ब्लड थिनर देते हैं. तो वो घर आ गए थे और उनको ब्लड थिनर शायद नहीं दिया डॉक्टर ने. सो द ब्लड क्लॉट वेंट टू हिज ब्रेन. ही डिडंट वेक अप आफ्टर अ वीक और सो. एंड मुझे पता था, आई हैड अ फीलिंग मैं नहीं जा सकती थी. और आप नहीं पहुंची. एंड आई एम ग्लैड कि मैं नहीं थी. कि मेरे अब्बू मैं अगर सामने होती तो शायद उन्हें और तकलीफ़ होती जाने में. आप अक्सर देखें कि लोग जिनकी डेथ होती है ना, सबसे प्यारा होता है वो उसी वक्त निकला होता है कहीं जाने के लिए और पीछे डेथ हो जाती है. आई डोंट नो, अल्लाह मियाँ का कोई सिस्टम है. मे बी इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू गो टू द अदर वर्ल्ड. अगर लव्ड वन सामने होता है तो शायद तकलीफ ज़्यादा होती है. बट आई कुड नॉट ट्रैवल एंड माई मदर जस्ट पैनिक्ड कि अब्बू की भी वही सर्जरी थी और मेरी भी थी. मेरी February 15th अब 2011 में सर्जरी. January 24th my father passed away. My mother didn't care about iddat or anything. She just traveled to me and she was so worried about me. तो February 15th मेरा हुआ total hip replacement. उसमें ऐसा लग रहा था, और वो पहले ही दिन आपको सर्जरी करके खड़ा कर देते हैं. Okay. ताकि सर्कुलेशन हो. जो शायद अब्बू की नेग्लिजेंस थी वो. एंड खड़ा कर देते हैं. एंड अब्बू, आपको एक मिरेकल भी बताऊंगी. मिरेकल सुनेंगी आप? बिल्कुल. तो अब्बू जैसे एक शॉल पहने हुए थे जब उनकी डेथ हुई थी. तो ब्राउन शॉल नहीं होती जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर क्वेटा की ब्राउन जिस पे ग्रीन सी स्ट्राइप होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अम्मी वो ले आई थी. अच्छा. तो अब जब खड़ा कर दिया मुझे उस सर्जरी के बाद, एक्सक्यूज़ मी, तो मैंने कहा अम्मी, अब वो उन्होंने कहा आपने वॉक करना है. तो वॉक क्या करना है, वो वॉकर पे आप एक स्टेप लेते हैं. लाइक अ वीक आफ्टर माई सर्जरी. मैंने कहा अम्मी मुझे ठंड लग रही है. मैं LA में थे हम. तो मैंने कहा मुझे बाहर जाना है, मुझे शॉल दे दें. अम्मी ने कहा ये अब्बू की शॉल है. नहीं, मैं नहीं दे रही. मैंने कहा अम्मी जस्ट गिव इट टू मी. मैंने कहा गंदा क्या कर देना उसे. गिव इट टू मी. आई वेंट आउटसाइड. और अब्बू को गए हुए कोई 15-20 दिन हुए होंगे. I went outside, I looked up at the sky, I stood there, open air, and I took the shawl and I said, Abbu ji, if you can see me, if you're with me, show me a sign. And मैंने वो shawl पहनी and मैं हल्का हल्का walk करके बाहर निकली. And just cross किया तो across the road एक गाड़ी रुकी. अचानक से एक औरत थी. She said, hey. So I just turned and looked at her and I thought कि मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उर्दू में बात करूँ. नहीं मिक्स है, सही है. हाँ. बट सही. तो सामने उस औरत ने अंग्रेज़ी में मुझसे कहा कि hey, there's an aura around you. और मुझे रुकना पड़ा देख के कि एक लाइट है तुम्हारे इर्द गिर्द. और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी 37 बोन्स टूटी थी. तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी. ओह वाओ. और चली गई. वाओ. सो
I think Allah did something for me کہ مجھے وہ encouragement اس وقت چاہیے تھی اور وہ ملی مجھے.